तो हेलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कॉमिक नरेशन में। लास्ट हम लोगों ने दो इश्यूज पढ़े थे जिसका कि अभी तुरंत सिनेस्पाई आपको रिकैप दे देंगे और फिर उसके बाद आज की नरेशन स्टार्ट होगी जो कि करूंगा मैं। सो चलो, ऑल ओवर टू सिनेस्पाई ताकि समय ना वेस्ट तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो इश्यूज में देखा, जो कि हम लोगों ने पिछले नरेशन में पढ़ा था, वो था हमारा ये इशू। इसका नाम था वैलिडेटर। वैलिडेटर एक सुपर हीरो का नाम था। हमें ये चीज पता चली इस इशू में। ये सुपर हीरो की टीम जो थी वो हमारी नॉर्मल अमेरिका की जो शील्ड की जो टीम है या फिर एवेंजर्स की टीम है, ये उनकी टीम नहीं थी। हमें मालूम पड़ा था इस इशू में कि वो जो बॉम्ब साइट्स थी, यानी कि जो 7 बॉम्ब साइट्स हमें पहले दिखाई गई थी, जिनके ऊपर एक्स निहिलो ने बॉम्ब छोड़े थे ह्यूमंस को टेराफॉर्म करने के लिए, उन अलग अलग साइट्स में से एक साइट रेजिना, वो आती है कैनेडियन शील्ड के अंडर। तो कनाडा की एक एवें या आप मान सकते हो कनाडा की एवेंजर्स टीम आप कह सकते हो, कैनेडियन एवेंजर्स। उनकी टीम का नाम होता है अल्फा फ्लाइट, और उनकी टीम के मेंबर्स होते हैं ये चार: वेंडिगो, वैलिडेटर, किंगडम और बॉक्स। ये चारों एक मिशन पर जाते हैं, यानी कि जो रेजिना वाली साइट होती है, और उस मिशन पे इन सभी लोगों की डेथ हो जाती है। और लास्ट में वैलिडेटर ये मैसेज देते हुए मर जाती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना है और हमें ये चीज डिस्ट्रॉय करनी है। अब इस चीज की जो फुटेज है वो कैप्टन अमेरिका को दिखाते हैं एजेंट पोर्टर और एजेंट मैकॉर्ड। फिर कैप्टन अमेरिका जो है वो कैनेडियन शील्ड के साथ वर्क करते हैं और अमेरिकन शील्ड भी इनके साथ काम करती है। और कैप्टन अमेरिका अपनी एवेंजर्स की टीम को लेकर जाते हैं उसी साइड पर, यहाँ पे मैनीफोल्ड वगैरह भी होते हैं, मैनीफोल्ड, वुल्वरीन, ब्रूस बैनर, फैल्कन और स्मैशर, और साथ ही साथ कैप्टन यूनिवर्स भी। इस रेजिना वाली बॉम्ब साइट के अंदर जाते ही इनको पता चलता है म्यूटेटेड जंगल, यहाँ पर कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स होते हैं और बहुत सारी वाइन्स होती हैं और म्यूटेटेड पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ पर जाते ही उन्हें एक अजीब सा बोलने वाला एलियन मिलता है, छोटा सा डॉबी जैसा, और उसके जैसे बहुत सारे होते हैं, और वो इन एवेंजर्स को लेकर जाते हैं कहीं पर। इनको फॉलो करते हुए जब सारे एवेंजर्स अंदर जाते हैं तो उन्हें एक पॉन्ड टाइप जगह मिलती है जिसके अंदर से ग्लो आता है और उसके अंदर से निकलती है वैलिडेटर। इसको देखकर सभी चौंक जाते हैं, और उसके बाद जो वैलिडेटर होती है वो एजेंट मैकॉर्ड के कानों में कुछ कहती है। हमें यहाँ पता नहीं चलता कि क्या कहती है, पर फिर सभी एवेंजर्स वहां से अचानक से वो सब कुछ ब्लैकआउट होता है और सभी एवेंजर्स जो होते हैं उस साइड के बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर सभी जो एक्सट्रैक्शन टीम होती है शील्ड की, कैनेडियन एवेंजर्स की, उन सबकी एक्सट्रैक्शन टीम जो होती है इन लोगों को एक्सट्रैक्ट करती है वहां से। यहाँ पर कैप्टन और एजेंट मैकॉर्ड के बीच कुछ बातचीत होती है। एजेंट मैकॉर्ड कहते हैं कि कैप्टन से पूछते हैं कि क्या तुम इन सब ये सारी बातों को उन लोगों को बता दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे शील्ड को? तो कैप्टन कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। पर एजेंट मैकॉर्ड ऐसा नहीं कर सकते थे। एजेंट मैकॉर्ड के सर के अंदर एक इम्प्लांट लगा होता है जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डेड होती है। तो वो सोचते हैं कि अब मैं इस डेटा को कैसे छुपाऊं, और फिर बात करते करते वो अचानक से अपनी गन निकाल के खुद को शूट कर लेते हैं, और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। स्टार्टिंग में हमें ये इस इशू के पैनल में दिखाया गया था कि यहाँ पर मारिया हिल एक और शील्ड एजेंट के साथ उनके सर से वो वीडियो इम्प्लांट निकालते हैं। फिर आगे आगे हमें पता चलता है कि एजेंट पोर्टर जब बात करते हैं मारिया हिल से, तो फिर वो बताते हैं कि फुटेज और भी ज्यादा थी, उनके पास और ज्यादा फुटेजेस थी। ऐसे तो वो 49 मिनट्स की बात करते हैं, पर फिर बाद में मारिया हिल के इंसिस्ट करने के बाद वो बताते हैं कि इस फुटेज में और ज्यादा मिनट्स हैं, और वो फुटेज होती है 327 घंटे की। यानी कि वो सभी एवेंजर्स उस गोले के अंदर 327 घंटे तक थे, और वैलिडेटर उन्हें क्या दिखाती है ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। और यहां पर हम नीचे जो देख रहे हैं वो सीन्स हैं जिसमें सभी जो एवेंजर्स थे, यानी कि सबसे पहला फ्रेम हम देख सकते हैं स्मैशर का, फिर उसके बाद हम ब्रूस बैनर को हल्क के रूप में देख सकते हैं, और नीचे होता है फैल्कन। ये सभी म्यूटेट होते हैं, ये सभी अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट्स, फ्यूचर, अपने पास अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं।
इन्हें अपने शरीर में बदलाव देखने मिलते हैं। इन 327 घंटे तक इन लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, अपना फ्यूचर, अपना पास्ट और तरह-तरह के म्यूटेशंस को एक्सपीरियंस किया, देखा। यहाँ पर वुल्वरीन, मैनीफोल्ड, कैप्टन अमेरिका और एजेंट मैकॉर्ड भी होते हैं। उसके बाद एजेंट मैकॉर्ड को उस फुटेज में यही पता चलता है कि वैलिडेटर ने उनके कानों में क्या बोला था एजेंट मैकॉर्ड के। और जो लास्ट टाइम एजेंट मैकॉर्ड के कानों में वो बोलती है, वो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो उससे कहती है कि दिस सिस्टम इज नाउ ऑनलाइन। ये आखिरी शब्द होते हैं वैलिडेटर के, जो हम लोगों को स्टार्टिंग में ब्लर कर दिया गया था। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम राबू मलाल का बनाया हुआ सिस्टम ही है, जिसकी वो बात कर रही है, जिसका वो फोरशैडोइंग कर रही है, जिसका वो हिंट दे रही है। ये सिस्टम प्रॉपरली है क्या, ये बाद में हमें एक्सप्लेन होगा आगे आगे चल के टाइम रन्स आउट की सीरीज में। बट अभी के लिए यहाँ पर सिस्टम नाम से इस चीज को हिंट किया गया है। यहाँ पर मैनिफोल्ड, एवेंजर सब डिस्कस करते हैं कि वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वुल्वरीन जो है वो बताता है सबको कि वैलिडेटर जो थी वो एजेंट मैकॉर्ड की बेटी होती है, और उसको जो है वो बचाने के लिए एजेंट मैकॉर्ड खुद को गोली मार लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इशू, वेक द ड्रैगन। ये एक सब प्लॉट रहता है। हम लोगों ने देखा कि कैप्टन अमेरिका जो है वो कुछ एवेंजर्स को एक साइड मिशन पर भेजते हैं मकाओ के अंदर। यहाँ पर होते हैं शैंची, स्पाइडर वुमन, ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल और सनस्पॉट और कैनन बॉल। ये सभी कसिनो में जाते हैं एक माथियास डीड्स नाम के बंदे से डेटा निकलवाने के लिए, उससे वेपन निकलवाने के लिए, जो कि वो यहाँ पर बेचने आया होता है। S7 नाम का वो वेपन होता है। यहाँ पर शैंची कुछ एजेंट्स, सॉरी, निंजा से लड़ता है, और उनके लीडर का नाम होता है किमेरा, जो कि हम ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, कैसे करके इन सबसे डेटा निकलवाना है, इन सबसे बातचीत करते वक्त इनसे कैसे इंटेल निकलवाना है। और साइड बाय साइड शैंची जो है वो उन कैमेरा के जो निंजास होते हैं उनसे लड़ रहा होता है। पर एंड होते होते, ये सब कुछ एंड होते होते, यहाँ पर बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि शैंची के पास नंचक्स हैं, जो कि टोनी स्टार्क ने उसे बना कर दिए थे। हम लोगों ने स्टार्टिंग के इश्यूज में देखा है कि टोनी स्टार्क शैंची के लिए वेपन्स बिल्ड कर रहा था। यहाँ पर एंड होते होते हमें पता चलता है कि नताशा बहुत सारे क्रिमिनल्स को वहां पे मार देती है उस कसिनो के अंदर, क्योंकि वो सब भी खरीदार थे, वो भी कुछ खरीदने आए थे। और साथ ही साथ माथियास डीड्स, जो कि यहाँ पे वेपन बेचने आया था, वो यहाँ पर बताता है कि वो यहाँ पर बेचने नहीं बल्कि कुछ खरीदने आया था। और सभी एवेंजर्स ये सब होने के बाद जो है सबको मार के वहां से निकल कर वापस जा रहे होते हैं। तो प्लेन के अंदर उन्हें मिलता है शैंची, जिसने कमेरा को मार चुका होता है, और वो उसने हेलमेट लेके यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर माथियास डीड्स यहाँ पर कुछ खरीदने आया था, और वो खरीदने आया था एक आर्मी ऑफ असैसिन्स। यानी कि जो एम है, एम कंपनी, वो जो है वो एक वॉर के लिए तैयार कर रही है अपने टीम को। अब आगे इवॉल्व। आई होप मेरी आवाज आ रही है। ओके, इवॉल्व। इस इशू में हमको देखने मिलेंगे आयरन मैन, थॉर, हॉकाई, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, कैप्टन यूनिवर्स और हाइपीरियन। The legend of creation, laid bare and laughing. The universe itself breaking apart before their eyes. Help them, Father. They are only men. Thor, a moment. You need to see this. So I've been running some data analysis on the little hatchlings from the garden site here in this savage land. I think you're going to find this fascinating. Would you look at that? The Helix Nebula recording at 700 stills per second, archived for later analysis. Stark,
Oh, sorry. I'm here, but not here. The latest in Stark omniversal multitasking and productivity software means that while I am interfacing with you, I also happen to be 700 light years away watching celestial fireworks with a talking raccoon, in space. Of course, I know, Anthony. Mjolnir was forged in the heart of a star. Right. Anyway, my point. These kids, since their evolutionary rebirth, they have been exhibiting some very interesting traits, such as here, take a look. On the left is immediate post birth, and as you can see, they are already at toddler stage development in human terms. On the right is where they are now. It's been 2 weeks, and all of them have grown something equivalent to 7 years, right into nascent pre adolescence. And here's the really tricky bit. In that time, not one of them has slept at any point. Half of them still haven't learned to sit down. Just ask any of the child care support team. The ones that haven't quit. I mean, and then there's their diet or lack thereof. No food, no water, picture perfect health. There is no base level energy. In, energy out, system at play here. For a minute, I thought it might be photosynthetic. But look at this. There are no gills. Help, nothing. Respiratory, nothing breaking anything down into oxygen. They don't breathe. He's been in there for 4 hours. He might never catch the fish, but he's not going to stop. You see where I'm going with this, don't you? They're beyond human now. Maybe something like you. And maybe something more. Aye, Hyperion, maybe they are, but as the All Father has often said, children need shaping. Perhaps they are what's next for the world. Maybe they are something better. Right. At some point, someone's going to need to integrate these kids into a larger system. And when we do that, well, look, scarcity, need, desire, ugly as these things can be, they are the fundamental building blocks of most any societal structure. With nothing to lose, there is no sacrifice. When you need for nothing, do you dream of anything? From struggle comes virtue, it's part of our nature. And if it's not part of theirs, then I will teach them and they will learn. Perhaps we can learn from them also. It is worthy a cause. It is a worthy cause. One that you should not have to undertake alone. And so you will not. The Savage Land. My memories are stored in light. My mind, a non-linear photonic array with virtually instantaneous recall, meaning there is little difference between now and then. My memories always dominated by my life's most significant event. Yesterday I saw my Earth collide with another Earth and die. I see it now, and I will see it tomorrow. So I work to create better memories. I work to make this world better. I work to save it.
We have broken the children into small groups for an informal hands on learning experience with their designated instructor. The hope is if we can make the process of discovery something intimate and individualized, they will in turn want to share that new knowledge with their peers outside the group. Teaching them the inherent meaning of value itself. That's good, Hyperion. I like that. Hmm. I've tried to tailor these lessons to suit our people the best I can, but my experience is limited. So I would be grateful for any input you might have regarding my choices. Good idea. So, Spider Man, what's he supposed to be teaching them? With him distracted by your sudden generosity, you take the opportunity to strike, and then you can do with your enemy as you will. What? Look at the world around us. They need to know how to survive. I agree. However, how exactly does this help them understand the concept of trust? Isn't it obvious? By teaching them not to give it so freely. I'm sure things are going very well for Thor's group. And when the sun rose, a roar erupted from the armies of Asgard when they saw the warriors three returning on the horizon. For with them they carried the head of the great beast. The celebration that followed filled the halls of Asgard. There was much wine and ah, much of other things of which I will tell you when you are a good bit older. But why we sing of this? Why the story survives? This is what matters. Why did those brave warriors stand and be counted on that day? Why did they risk it all in in the caverns of the nightmare beast? Not for treasure, but for glory, for Asgard, for all that they loved. There are quests worth undertaking, and now you will do the same. You three, you three, and you three. The stone I just threw is no ordinary stone. It is the rock of eternal enchantment. It will be your first quest together. Your team will work to retrieve it from the mountain top. My favor will fall on the worthy. Well, what are you waiting for? Go, go, now! Run, run, like an ice giant with his fundamental in flames. Well, see? Kids hiking mountains looking for magic rocks. We are off to a strong start. Ha! Brothers, this was a wonderful idea. It's been far too long since I saw the joyful smiles of children. We should drink now. A lot and for quite some time. For these are great works we do. They're fine, Jess. Hey, I'm pretty sure they saw you rubbing the sunscreen on the back, and vice versa. I say lessons learned, kiddo. I think
The deal was they were supposed to be learning something about accountability. Trust me, I know what I'm talking about. I was an orphan, and look how I turned out. Hmm. Man, just look at this beach. Look at me. Look at you. Hey, look at what you're wearing. Tell me, what's wrong with any of this? Huh? Just don't complain to me when the man from another dimension breaks your leg. From the tomb of the undying one inside the lonely mountain, Garrock, the petrified man, sees and feels every moment of life within the boundaries of the savage land. He is one with its essence, its immortal guardian, its watcher. This place has been changed by the origin bomb. Chaos introduced into a place of once perfect order, but as the children below laugh and play, he feels something he thought lost to him, hope. But then he remembers the ship. He wants to savor it, wants to enjoy this new dawn and what comes with it. And his hope is replaced by something all too familiar, dread. Tell me, Hyperion, on your world, had you children of your own? No, not for a lack of desire, mind. I mean, just I was taught the things in front of me. The duties I was charged with were more important. And now I'm no longer that I'm no longer that man. There are those that fear that kind of change, but the things we have seen recently, the things we have fought against, if there was ever a time for one to change their path, you are troubled. Hey, the Fimbul winter has made me melancholy. Through Ragnarok and Catalysm, I have waged war, commanded thunder, but what we face, what I sense is coming, that none can prepare for. The captain and Stark, they are brave men, men of high ideals, but the mortal life is but the blink of an eye, and I do not know if they can truly comprehend this. Not as we do, you mean? You have seen the death of a world, Hyperion, and felt that nothing that lies in its wake. I fear there is more of that ahead, much more. So this is the world and our children in it? We either choose to be crippled by that fear or we raise their innocence to be steadfast. We teach them hope and then believe it will be enough. Huh?
Haha! The stone is found then. And now would be declared victor, little one. Hmm? Worthy. You want to understand why, do you? Oh, I know this one. I can teach them something too. I can help to be, I can help be helpful. Uh, I'm not sure this is in any way safe. These creatures, they rely on the air, the earth beneath their feet, other life around them for substance, and you have no such reliance. That is your gift. But if that is, so what role will you play in this system? What will be your purpose in walking alongside them? To provide? Hello, my children. You have learned many things today, haven't you? Exciting things, challenging things, a way to live in a world that is not like you. A man asked earlier, if one needs nothing, does he dream of anything? I think he does. A world without need. To be given is to know what it is to give. We know virtue because while we may not suffer, we can hear the suffering of those around us. And it is our calling to end all of that together. Bah, more sentimental hogwash from the eternal plane, I say. These children may not breathe air, but cut them, they bleed. You raise them to be messiahs, they'll make for wonderful martyrs. Remember what Uncle Spider-Man says, brats. It's all well and good to live above the food chain until you come across a predator. Him, accountability, being there when it counts. He was starting to burn. What kind of beast is this? It's the savage land. We don't have enough biologists on the planet to catalog all the indigenous species. Question becomes, is he a stray or a part of some larger pack? A hunter, gatherer, a scout? No, you idiots. He's the distraction. Kids, someone tell me how the Fantastic Four do it. Welcome, welcome, my little ones. I hear you are quite advanced. The best that natural selection has to offer. What good fortune that this progress has caught the eye of the high evolutionary. I have the urge to make something new.
इवॉल्व। तो ये इशू शुरू होता है थॉर के अपने ऑल फादर्स से प्रे करते हुए। वो शुरुआत से ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। वो उस टाइम पर भी था जब एक्स निहिलो और एबिस एबिस ने ये गार्डन बनाया। वो तब भी था जब वाइट इवेंट हुआ, और वो अब भी है जब ये सब प्लान कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं आने वाले खतरे के लिए। वो परेशान है इन मॉर्टल लोगों के लिए, और वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। यहां पर आयरन मैन उसे दिखाता है कि उसने एक ऐसा टेक बनाया है जिससे वो कई लाइट ईयर्स दूर रॉकेट के साथ होते वक्त भी यहां पर मौजूद है। और उसके बाद हमें यहां पर दिखाए जाते हैं वो बच्चे जिन बच्चों को स्टार्टिंग में एक्स निहिलो ने बनाया था, यानी कि जिन्हें हिपेरियन जो है वो गोद ले लेता है माई चिल्ड्रन बोल के। यहां पर हमें पता चलता है कि ये सभी जो बच्चे हैं वो इस टाइम पर सैवेज लैंड के अंदर हैं। अब मैं आप लोगों को सैवेज लैंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सैवेज लैंड जो है वो मार्वल के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि एक कंटेनमेंट बेस है जहां पर बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड स्पेशीज, प्री हिस्टोरिक एनिमल्स जैसे डायनासोर्स और दुनिया भर के जितने भी वियर्ड स्पेशीज है ना एनिमल्स की, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या जो बहुत प्री हिस्टोरिक है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और भी तरह तरह की स्पेशीज हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, ना ही टोनी स्टार को, ना ही रीड रिचर्ड्स को, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत चीजें हैं। और यही होमलैंड, यही एक सैवेज लैंड ही एक होमलैंड होता है जहां पर रह रहे एक सुपर हीरो कजार का। कजार के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि कजार जो है वो आगे में भी आप लोगों को पता चले इस इशू के अंदर। बट हाँ, सैवेज लैंड के अंदर इन बच्चों को रखा गया है जिनके ऊपर टोनी जो है वो टेस्ट कर रहा है, वो स्टैट्स चेक कर रहा है कि ये एक्चुअली है क्या, ये बच्चे आखिर मतलब किस तरीके से इनकी जो स्पेशीज है वो किस तरीके से ग्रो करती है। अब यहां पता चलता है कि इन बच्चों को ना पानी की जरूरत है, ना इनके पास गिल्स है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ना इन्हें भूख लगती है, ना इन्हें प्यास लगती है। लाइक ये ऑलमोस्ट लाइक एक गॉड की तरह है जिन्हें कुछ जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। बट फिर यहाँ पर थॉर और हिपेरियन के बीच में कुछ बातचीत होती है और आयरन मैन के बीच में। और यहाँ पर आयरन मैन बहुत ही क्रेजी बात बोलता है। वो कहता है कि अगर इन बच्चों को हम मुश्किलें ही ना दें, अगर इन बच्चों को कोई चीज की नीड नहीं होगी, इन बच्चों को कोई चीज की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो फिर ये उससे डील करना नहीं जानेंगे। ये इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज में हेल्प करने की, कोई भी अच्छा काम करने की, कोई चीज की इन्हें नीड ही नहीं होगी, तो ये कोई चीज क्यों करेंगे। फिर यहाँ पर थॉर और हिपेरियन जो है जिम्मा लेते हैं इन बच्चों को टीच करने का, यानी कि इनकी जिम्मेदारी लेने का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। फिर हम देखते हैं सैवेज लैंड के अंदर हिपेरियन अंदर जाता है और वहां पर स्पाइडरमैन जो है वो इन बच्चों को कुछ तो सिखा रहा होता है। वो इन बच्चों को अपनी रक्षा करना सिखा रहा होता है, ट्रस्ट के बारे में सिखा रहा होता है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना है। और फिर यहाँ पर अब दूसरी पार्टी को देखते हैं, यानी कि थॉर की पार्टी को। तो थॉर यहाँ बच्चों को अजीब अजीब कहानी सुना रहा होता है एसगार्ड की। बट जैसे ही वो देखता है कि हिपेरियन और आयरन मैन आ रहे हैं, तो वो उन्हें एक टास्क देता है, एक पत्थर ढूंढ के लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डायनासोर के ऊपर वो बैठकर जा रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सैवेज लैंड के अंदर बहुत सारे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स पाए जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक शिप दिखाई जाती है, जिस शिप में से बहुत सारे बहुत सारे तरह तरह के अजीबो गरीब एनिमल्स, लाइक म्यूटेटेड स्पेशीज, कंबाइंड स्पेशीज वाले जानवर जो कि इस लैंड के नहीं है, वो यहां से इस शिप में से निकलते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन होती है थॉर और हिपेरियन के बीच में, जहां पर वो ये बात करते हैं कि टोनी, कैप्टन, ये जो लोग हैं, ये सब कितने भी बहुत ज्यादा हाई मोरल्स के इंसान हो, पर अंत में ये मॉर्टल मैन ही है। और इनकी लाइफ एक टाइनी स्पेक जैसी है इस यूनिवर्स के अंदर, इस मल्टीवर्स के अंदर।
तो थॉर और हिपेरियन जो है वो लिटरल अपने गॉड वाली लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं और अपने मार्टिरडम और इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, अपने वॉर के बारे में, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इस इन टास्क से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, टीम वर्क करना सीख रहे हैं। और उसके बाद फिर हाँ, फिर वो बच्चे जो हैं वो ढूंढ के लाते हैं वो पत्थर, और यहाँ पर कैप्टन यूनिवर्स भी आती हैं। कैप्टन यूनिवर्स यहाँ पर उन बच्चों को कुछ कुछ बोल रही होती है, कुछ सिखा रही होती है, पर अचानक ही यहाँ पर एक बीस्ट जो है इन बच्चों पे हमला कर देता है। जिसको हॉकाई तो पहले मार देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि कुछ और बीस्ट जो होते हैं वो बच्चों को उठा के चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें वो उन बच्चों को उठाकर उस शिप में लेकर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर रिवील होता है कि ये जो बीस्ट थे, ये जो शिप थी, ये होती है हाई एवोल्यूशनरी की। हाई एवोल्यूशनरी आप जानते ही हैं कि वो ऐसे स्पेशीज और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीवों को पकड़कर उनका मैशअप बना के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और अजीब अजीब चीजें बनाता है। तो यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी सकार में हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी जो है सैवेज लैंड के अंदर आ चुका है, और उसके लिए तो ये जो लैंड है सैवेज लैंड, ये खजाने की तरह हो गया, जिसमें उसे बहुत वियर्ड वियर्ड एनिमल की स्पेशीज, बहुत पावरफुल और बहुत ही वियर्ड चीजें मिलेंगी। और उन्हें उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये बच्चे हैं, तो वो इन बच्चों को ले लेता है। अब आगे। Wrong. इस इशू में हमें देखने मिलेंगे आयरन मैन, थॉर, हॉकाई, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, कैप्टन यूनिवर्स और हाइपीरियन। The Savage Land. This place was created long ago by those that live beyond this universe. It has known many masters since then. Some ruled, some destroyed. Some did something altogether different. The High Evolutionary made something of this savage land. He created like a god, and as with any god, a maker has a peculiar familiarity with his creations. He knows when there is a change in them or in their environment. But unlike the gods, Herbert Wyndham is not covetous over what he has made. He sees change for what it is. He appreciates a catalyst. How else will things evolve? Elsewhere. Where are they? Hyperion, easy. You are going to. What? I cannot harm what isn't there, our man. 1 minute. They were here with us, and then they were just gone. This is unacceptable. The beast that took them seemed to have vanished from the plain sight. Right. Heat, motion, sound, frequency, every sense I have got is drawing a blank. It's like they flew into nowhere. Hate to say it, gents, but I'm afraid all we can do is hope the traditional route has more success. No tracks? None. That I can find where the hell is Wolverine when he would actually be useful.
Do you hear that quiet? Please don't. Do you hear that noise? No, I don't hear anything. Exactly. It's perfectly peaceful and serene nature, just as it should be, without several dozen screaming zebra androgynoids running around being weirdo. Don't hate him because he's right. Yeah, well, he's gonna get exactly what he wants unless we get some help from we all, everybody, no matter how grown ups we are. We all need help sometimes. And yet, this one seems to provide so little for himself. It is not my help you need, but his. Greetings, Avengers. I am Garrok, your servant. He is no such thing, he is a watcher, and his work here pleases me. I'm hungry. Your words humble me, goddess. A watcher? Great. You watched our rugrats then get snatched up. Then, indeed, Clint Barton, I know where your lost children are and who has them. If you come with me now, I will take you to him. The children sleep. They do not know this place or their purpose in it. It is his gift to them. And they cry out for their father to be given a moment's peace, a solitary respite until they are awakened. Once we arrive, understand, I cannot interfere. It is not my role. We'll deal with its environment ourselves. How much farther to go, Garrock? Not long at all, my lord. In fact, we are here. What? I don't get it. Ha! What's not to understand? The stone geriatric has led us to his imaginary treehouse. I told you this is what comes from listening to New Age half-wits. We are probably only moments away from holding hands and talking to dead parents via Christ. Oh, damn you! All where? Projection explains plenty. Well, great. So long as we have got no idea what's on the other side. I say we jump right in. Yeah. Hi, evolutionary sir. We have intruders. They've breached the cloaking field, sir. Hmm. Avengers come to collect their lost boys. No doubt. Very well then. We do what we must. Hide the children. Wake the beast. You recognize these things? I think I do, in fact, but I'm more worried about the seismic activity.
Damn it! They've got a fully functional terminus and it just crushed. Iron Man, someone got a plane here? Hyperion, go, find your children. I can help you with this. You are a brave and fearsome warrior, and together we are sure to face many foes on many adventures, standing side by side in great battles and the celebrations that will follow. But this is a giant, and I was born to fell giants. I see you in there. Ah, yes, and you must be the only they call Hyperion. Where are they? You have to cut through the gibberish, but once you do, the children spoke quite fondly of you. Where are they? Patience and God. Once you learn what. Ah! You, you don't understand what I'm doing. I don't care. You must know. You must. Do you know what those magnificent creatures are capable of? They are living batteries, self sustaining. They are children. They are so much more. Do you know what I could do with limitless power? What I could do if I could harness it? The evolutionary founded that would flow. That's a high price that should be paid, isn't it? Isn't it? This isn't a fight you can win. Your experiment isn't going to happen. You don't understand. It already has. How do you think I resurrected the Terminus? It was a broken machine built to conquer worlds, and I resurrected it. All it took was the right power source. I see what you've done now. No! No! Father, give me a storm that would clear the sky. Fools! It's all such a waste. Thor, hold! Give me lightning that would burn the world. Hours later, my memories are stored in light. My mind, a non-linear photonic array with virtually instantaneous recall, meaning there is little difference between now and then.
My memories always dominated by my life's most significant event. Without its power source, the machine poses no threat. And the children? Fine, resting for the moment. I thought, I thought they blame it. In that moment, then friend, not long ago we sat on this hill, and I asked if you had any children on your world. But I could tell even then you that you were not. And how is that? I am a god. I understand the needs of men, when to focus on the living, and when to prepare for things that would rob us of that joy. There is a storm brewing, brother. I know you can feel it, just as I do. The call of a family is a strong one. I've felt it myself many times, but in the end, great warriors are too often laid low by that which they must protect. You don't understand, Thor. There is no dulling this. There is no avoiding what it's done to me. My whole life I have fought for ideas, grand experiments, and systems and structures of belief, and now I fight for something better. I fight for them. You should know there are many who would call that a flaw in one's armor, something to be exploited. Then I would say, let them think that, brother. These children, they give me a claw, they give me a cause, and it does not make me weak. It makes me strong. It is impossible to see light replacing light, so it took some time before I became aware that my life's most significant moment was no longer the death of my world, but the gaining of a new one. God help anyone that tries to take it from me. ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। इस इशू का नाम है स्ट्रॉन्ग। इस इशू की शुरुआत में हम देखते हैं सैवेज लैंड। यहां पर हमें बताया जाता है कि इस सैवेज लैंड पर बहुत सारे मास्टर्स आए। बहुत ने रूल किया, बहुत ने खराब किया, पर कुछ थे जिन्होंने कुछ डिफरेंट बिल्ड किया। ये हाई एवोल्यूशनरी नाम का इंसान, इंसान तो नहीं कहेंगे इसे, आई मीन एक पर्सन, इसने यहां पर आने के बाद बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे एक भगवान बनाता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये इन बच्चों को किडनैप करके कुछ मशीनों में डालता है। वो मशीनें एक बड़ी मशीन से कनेक्टेड है। आगे देखते हैं कि हिपेरियन इन बच्चों के किडनैप होने के बाद बहुत ज्यादा पागल हो जाता है गुस्से से, क्योंकि ये हिपेरियन जो है उन बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिपेरियन के माइंडसेट को समझाता हूं कि हिपेरियन ने अपना पूरा प्लेनेट खो दिया। हिपेरियन ने अपनी आंखों के सामने वो वर्ल्ड तबाह होते देखा है जिसके लिए वो एक लड़ता था, जिनको प्रोटेक्ट करता था, और हिपेरियन की आंखों के सामने ही वो वर्ल्ड खत्म हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब हिपेरियन इन बच्चों को ही अपना वर्ल्ड मानता है, और अब इनको प्रोटेक्ट करने के रास्ते में ही
वो किडनैप हो जाते हैं और हिपेरियन यहाँ पर इस पेन को नहीं झेल पा रहा है। यहाँ पर आयरन मैन बताता है कि उसने सब कुछ स्कैन किया, सैवेज लैंड को पूरी तरीके से स्कैन किया और उसे कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई दे रही, कोई भी थर्मल सिग्नेचर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो गायब हो चुके हैं, वो सारे जानवर उन बच्चों को लेकर। पर दूसरी पार्टी, यहाँ पर स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, हॉकआई और कैप्टन यूनिवर्स लाइक ट्रेडिशनल वे में खोजबीन कर रहे होते हैं उस जंगल में, सैवेज लैंड के जंगल में। और खोजबीन करते हुए वो उस आदमी से मिलते हैं जिस आदमी को हमने इसके पहले वाले इशू में देखा था। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और वो इन लोगों को लेकर जाता है हाई इवोल्यूशनरी के ठिकाने तक। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी इन बच्चों को एक पर्पस दे रहा है। एक आई मीन ये उसके पर्सपेक्टिव से है कि वो इन लोगों को एक पर्पस दे रहा है, इन बच्चों को एक नीड दे रहा है, इनको एक लाइफ में जो कि इनके पास है नहीं, इनके पास करने को कुछ है नहीं, तो इनको वो पर्पस दे रहा है। बट फिर भी ये अपने पिता के लिए चिल्लाते हैं। यहाँ पर ये बच्चा दर्द से हिपेरियन का नाम लेता है, ऐसा हम परसीव कर सकते हैं इस पैनल को देखकर। यहाँ पर ये आदमी जो कि वॉचर के नाम से, जिसको कैप्टन यूनिवर्स को कहती है कि ये यहाँ का वॉचर है, वो इनको एक पहाड़ के उस पर लेके आता है ठिकाने तक। और यहाँ पर स्पाइडरमैन जो है मजाक उड़ाते हुए कि ये तुम कहाँ लेकर आ गए, वो उसको टच करता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। यानी कि ये एक फोर्स शील्ड थी और इस फोर्स शील्ड के उस पार होता है हाई इवोल्यूशनरी का अड्डा, यानी कि उसकी शिप। उसके बाद सभी एवेंजर्स अंदर घुस के उस पर हमला कर देते हैं और उन सभी जानवरों से लड़ते हैं जो कि हाई इवोल्यूशनरी ने छोड़ रखे होते हैं। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अचानक से दिखता है एक बहुत बड़ा मशीन जिसको वो कहते हैं टर्मिनस। अब इस मशीन के साथ ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और हिपेरियन जो है वो हाई इवोल्यूशनरी के पास चला जाता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि हिपेरियन उन्हें बताता सॉरी वो उसे मारने ही वाला होता है कि हाई इवोल्यूशनरी हिपेरियन को बताता है कि मैंने जो मशीन बनाई है वो कैसे चल रही है। तुमने कभी सोचा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? तुमने कभी सोचा एक टूटी हुई मशीन को मैंने जिंदा कर दिया, इतनी बड़ी मशीन को, इतनी पावरफुल मशीन को मैंने जिंदा कर दिया। और तुम्हें पता है इसके लिए मुझे क्या चाहिए था? तो हिपेरियन को समझ में आता है कि वो पावर सोर्स की बात कर रहा है, यानी कि बैटरीज। और फिर वो वापस दौड़ते हुए उड़ते हुए जाता है क्योंकि थॉर जो है वो उस बड़ी सी मशीन यानी कि टर्मिनस को तबाह करने वाला था अपनी पूरी पावर लगा के। और थॉर ने उसके ऊपर बिजली, अपनी सबसे पावरफुल बिजली जो है वो मार ही दी होती है, लेकिन हिपेरियन तेजी से लेकर उस पावर सोर्स को लेकर उड़ जाता है जिसके अंदर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फिर ये सब लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पर थॉर और हिपेरियन बातचीत करते हैं और यहाँ पर थोड़ी मोरल एथिक्स की बात होती है। यहाँ पर थॉर कहता है कि आने वाली भी बहुत बड़ी वॉर है और हम इन चीजों को ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं ले सकते। हम अगर फैमिली और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ गए तो आने वाली वॉर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। जिसको लेकर हिपेरियन जो है वो ये कहता है कि मेरे पास लड़ने को कुछ नहीं था, फिर भी मैं आइडियाज, ग्रैंड एक्सपेरिमेंट्स और इन सब चीजों के लिए लड़ता था। पर अब मैं कुछ लोगों के लिए लड़ता हूँ, कुछ बच्चों के लिए लड़ता हूँ, कुछ इंसानों के लिए लड़ता हूँ। और उसे ये चीज बेटर लगती है पहले से। वो बच्चे उसे एक पर्पस देते हैं लाइफ का और वो कहता है कि ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी ताकत है। और फिर वो एक वार्निंग टाइप बात करता है। वो कहता है कि भगवान उसका भला करे जो ये चीज, जो ये खुशी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। अब इशू थ्रोन्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे, हाँ, हाँ मतलब आगे वही है। हाँ,
नहीं, रिकैप तो कर दिया मैंने, तुम वो कर दो, मतलब आउटर कर सकते हो, आउटर करके, क्योंकि क्योंकि अब जो है मैटर यहाँ पे सीरियस हो गया। ये जो थोड़ा सा हम लोग अभी ये वाली जो कॉमिक्स पढ़े हैं, पिछली 3 4 5 जो इश्यूज पढ़े हैं हम लोग, ये सब प्लॉट्स की तरह है, ये बैक स्टोरी की तरह है। अभी हम लोग इनकर्जन से थोड़ा हटके चल रहे थे, पर अब वापस से उस स्टोरी लाइन में चलेंगे जो कि मेन राबो मलाल से कनेक्टेड है। तो भाई दोस्तों, आपको आई गेस अभी तक का जो भी नरेशन था बहुत पसंद आया होगा, एंड ऑफ कोर्स जो एक्सप्लेनेशन थी और जो भी रिकैप्स थे, आपको सब चीज़ों में बराबरी में मज़ा आया। एंड आई होप कि आने वाले नरेशन में भी आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। एंड बी श्योर कि अगला नरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि सनस भाई ने बोला, क्योंकि अभी तक हम लोग सब प्लॉट्स देख रहे थे और आगे शायद अब एक मेन प्लॉट आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इस नए इशू का जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज है, इसको भी देख करके लग रहा है कि हाँ, कुछ अलग है, कुछ कुछ नया है। सो वेट करेंगे कल के लिए, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।